శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री कृष्णा कावेर्योर मध्य प्रदेशे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి.
మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థం కామ్యమోక్షం చతుర్విధం పురుషార్థం సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్యం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్యం ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్షం వీక్షణం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. వెంకటేశాయ. శ్రీ భూనీలా సమేత ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. கண்ணன் அடியினை எமக்கு காட்டும் வெற்பு, கடுவினைய இருவினைய கடியும் வெற்பு, திண்ணமது வீடன்ன திகழும் வெற்பு, தெளிந்த பெரும் தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்பு, புண்ணியத்தின் புகழிதன புகழும் வெற்பு, பொன்னுலகிற் போகமெல்லாம் புணர்த்தும் வெற்பு, விண்ணவரும் மன்னவரும் விரும்பும் வெற்பு, வேங்கட வெற்பென விளங்கும் வேத வெற்பே. வேதங்கள் புகழும் புனிதமலை நமது திருமலை. மகரிஷிகளும் ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் போற்றுகின்ற இந்த திருமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் கலியுக வரதராம் திருவேங்கடமுடையானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு அனுதினமும் நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. பக்தர்களே, இன்று துவாதசி. இந்த நன்னாளில் இந்த திருக்கல்யாணத்தில் பங்கு கொண்டு எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ணசுவாமி. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் செய்ய வேண்டிய ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனத்தை அர்ச்சக சுவாமி இப்போது செய்யவிருக்கிறார். அந்த மந்திர ஒலிகளை கேட்டு நாம் புண்ணியம் பல பெறுவோம். பச்சைமா மலைபோல் மேனி பவளவாய் கமலச்செங்கண் அச்சுதா அமரர் ஏரே ஆயர்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் என்று தொண்டடிப்பொடியாழ்வார் ஸ்வர்க்க போகமே கிடைத்தாலும் வேண்டாம், எம்பெருமானின் திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்தை தினமும் அனுபவித்தால் மட்டும் போதும் என்று திருமாலையில் பாடினார். அவர் பாடியது திருவரங்கத்தில் பள்ளி கொண்ட எம்பெருமானை. இங்கு நாம் அதே பாசுரத்தை இந்த திருமலையில் எழுந்தருளிக்கும் எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிப்போம். பூர்ணம் சாஸ்திர கல்லோல சங்குலம் விஷ்ணுபக்திதகம் சுத்தம் வந்தே ஸ்ரீ விகனோர்ணவம் भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओं भूः भूर्भुवस्वरों श्री भगवदात्मगा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्वती
परित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादकिष्के गृणोमि धत्ताकं शुचिरकं सुशर्माम् इदमापश्यवा शुभतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा विदताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम् ओम वरुणमावाहगामीं प्रचेतसमावाहगामीं रक्ताम्बरमावाहगामीं यादस्पतिमावाहगामीं धारागां वागमावाहगामीं कूर्चे सरस्वतीमावाहगामीं पुष्पे फल्लमावाहगामीं अक्षते काष्कवमावाहगामीं तण्डुले रवमावाहगामीं आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्नमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामीं वरुणाग्नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाग्नमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु ओमाग्ने गोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेषदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते धूतनिधत्तां प्रेषामधीशो विबधानामनादिः यामेषुस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपागिनमावाहगामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामि वामे जगामावाहगामि सूत्रवती जगासहित श्री विश्वक्सेनाग्नमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाग्नमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरें त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि भस्पशेम् इन्द्रस्य गुच्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवीव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवाकं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रविनोदा त्रविनसस्तुरस्य त्रविनोदासनरस्य प्रियं सुते त्रविनोदा वीरवती मिषन्नो त्रविनोदा आसते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागित्रानश्चक्राचरसं तनूनाम् पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरु वेतोपत्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च खन्यं पुष्केत् तावत् कुरुवेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषावर्धगन्तः सुदञ्जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्धिदां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्धिदां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुद्धिदां
రుద్ధిः సమృద్ధిः పుణ్యాహం సమృద్ధిः ఆపోహిష్ఠామగోభవస్థాన ఊర్తే దధాతనాం మహేరణాగచక్షుషే యోవశ్రవతమోరసస్తస్య భాజగతే హనః వసుధీరిభవాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్సక్షగా గజన్వధాం ఆపో జనగథాతనః ఓం పవమానస్సువర్చనః పవిత్రేణ విదర్శనిః యప్పోతాస పునాతమాం పునంతు మా దేవజనాః పునంతు మనబోధిగాం పునంతు విశ్వ ఆగవః జాతవేదః పవిత్రవత్ పవిత్రేణ పునాహిమాం శుక్రేణ దేవదీత్యత అగ్నే క్రత్వా క్రతుకం వృణో యత్తే పవిత్రమర్చిషీం అగ్నే విదుతమంతరాం బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతి దేవ్యాగాత్ యస్కై భక్వీస్తునవో వీతపృష్ఠాః తగామదంతః సధమాత్యేషు వయగ్గస్యామపతగౌర ఈనాం వైశ్వానరో రశ్మభిర్మా పునాతో వాతః ప్రాణేనే శ్రోమగో భూః द्यावा पृथिवी पगसापगाभिः ऋतावरीयज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरुध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसो सर्वगुं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्मणां पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रो शुद्धोत्यामगं हिरण्मगो तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातु सोमस्पुस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोच्चगन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगें देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्चगन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्चगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्चगन्तां उदीच्यां दिश्याव ओषधगो वनस्पतगो मार्चगन्तामोत्भागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चगन्तां मधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्चगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्कजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधिगोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शिखेनो गृध्रानागुस्वधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्नां वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः पुनः पात्यर्घ्यातमनं समर्पयामि वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमागमनरागमनाय च போதும் என்று பாடியிருக்கிறார். அதேபோல் நாமும் திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானிடம் வேண்டுவது இதைத்தானே. இவரது தரிசனம் மட்டும் தினமும் கிடைத்தால் அதுவே நமக்கு போதும் அல்லவா? அந்த பாக்கியத்தை நமக்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தார் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சாதாரண மானிடப் பிறவிலாகிய நாமே ஏதாவது ஒரு மங்களகரமான காரியத்தை செய்ய வேண்டுமானால் எத்தனை முன்னேற்பாடுகள் செய்கிறோம். நாள், நட்சத்திரம், நேரம், காலம், சகுனம் என்று எத்தனையோ பார்க்கிறோம். இதுவோ பகவத் கைங்கரியம். இதற்கு நாம் எவ்வளவு முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஆகவேதான் எம்பெருமானின் நித்திய சூரிகளில் ஒருவரும் சேனா நாயகருமான ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அவரிடம் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு பூஜைகள் செய்து பின்பு மங்கள நீரால் திருக்கல்யாணம் நடைபெறும் இடத்தை புண்ணியாவாச்சனம் செய்துவிட்டு இப்போது அடுத்த கட்டமாக அஷ்டத்திக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணும் அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே,
கண்ணா, ஏழுலகுக்கும் உயிராயும் கார் வண்ணனை, விண்ணோர் தாம் புகழும் வெங்கட வேதியனை, தின்னார் மாடங்கள் சூழ் திருமங்கையர் கோன்கலியன், பன்னார் பாடல் பத்தும் பயில்வார்க்கில்லை பாப்பங்களே என்று திருமங்கையாழ்வார் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானை மங்களதாசனம் செய்யும்போது துவாபர யுகத்து கண்ணனும் கலியுகத்து திருவேங்கடவனும் ஒருவரே என்று உறுதிபடச் சொல்கிறார். அன்று குருச்சேத்திரத்தில் தேர்க்கட்டலில் நின்று கொண்டு பார்த்தனுக்கு கீதையை உபதேசித்த அதே பார்த்த சாரதி இதோ இங்கே திருவேங்கட மலை மீது நின்று கொண்டு நம்மை எல்லாம் ரட்சிக்க வந்திருக்கிறார். எம்பெருமான் சௌலபியன், நம்மால் சுலபமாக அணுகக்கூடியவர். இவரிடம் ஓடிவர நாம் ரிஷி முனிகளைப் போல தபஸ்களோ யாகங்களோ ஹோமங்களோ செய்ய வேண்டியதில்லை. கோவிந்தா கோவிந்தா என்கிற அவரது நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு அவரது திருப்பாதங்களை சரணமடைந்தால் போதும். இதோ உங்களுக்காக நான் இருக்கிறேன் என்று அபயஹஸ்தத்தை காட்டுகிறார். பக்தர்களே, அந்த எம்பெருமான் இதோ இப்போது அவருடைய திருக்கல்யாணத்தில் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தில் அங்கே இருக்கும் அந்த நவதானியங்கள் எனப்படும் பாலிகைகளில் மங்கள நீரை தெளித்து புஷ்பங்களாலும் துளசியாலும் அர்ச்சித்து பின்பு அர்ச்சத்துக்கு பாதகர்களையும் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் கலந்து கொள்ள ஆவாகனம் செய்யும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, சரணம் என்றதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. அதுதான் எம்பெருமானிடம் நான் பண்ண வேண்டிய சரணாகதி. சுவாமி தேசிகன் தேவப்பெருமாளை வேண்டி செய்த அடைக்கலப்பத்து என்கிற பாசுரங்களில் தெரிவிக்கும் விஷயம் இது. பத்தி முதலாம் அவற்றில் பதியனக்கு கூடாமல் எத்திசையும் உழன்றோடி இழைத்து விழும் காகம் போல் முக்தி தரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கச்சிதனில் அத்திகிரி அருளாளர்க்கு அடைக்கலம் நான் அடைந்தேனே. இது அவரது பாசுரம். ராமாவதாரத்தில் வனவாச காலத்தில் ஒரு சமயம் பர்ணகசாலையில் சீதா பிராட்டியின் மடி மீது தலை வைத்து கண்மூடி யோக நித்திரையில் ஆழ்ந்திருந்தாராம் ராமன். ரக்ஷாசூத்திரதாரணார்த்தம் ரக்ஷாபந்தன பூஜாந்த கிருஷ்யே ஓம் சுச்சி ஓஹவ்யாமருத சுச்சைனாகும் சுச்சுகம் ஹிரோம் யத்பரகம் சுச்சிப்யஹாம் ருதேன சத்யமிருதசாப ஆகந்துது ஜன்மான சுச்சகः பாவகா ஓம் ஷன்னோ நிதத்தாம் தபசோதிஹர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாகாம் ஓம் சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி சேஷாக நமः இதமாசனம் சேஷாக நமः பாத்யம் சமர்ப்பகாமி அர்घ्यं சமர்ப்பகாமி ஆச்சமணியம் சமர்ப்பகாமி புண்ணியபுஷ்பை பூஜகாமி சேஷாக நமः குரோபஹாரம் நிவேதகாமி பானீயம் சமர்ப்பகாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பகாமி சேஷாக நமः சர்வோபசாரான் சமர்ப்பகாமி சுப்ரீதः சுப்ரசன்னா வரதா பவது. हरिः ओं स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिधरर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्तित्यावा पृथिवीषु जेतुना स्वस्तके वागिभुवप्रवामहि सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तके देवा अवन्तर्भव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो आदिते कृथिं स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तदताघ्नता जानता संगमे महीं स्वश्चगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्स्व बृहत्यशो नाममिवारुहेमाम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शोभागुं शोभाम्. பக்தர்களே, ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படி நாகராஜனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணும் அந்த ரக்ஷை பூஜை என்கிற கைங்கரியம் இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்தது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். நாமும் நம்முடைய அந்த வர்ணனையை தொடரலாம். ராமாவதாரத்தில் வனவாச காலத்தில் ஒரு சமயம் பன்னகசாலையில் சீதா பிராட்டியின் மடி மீது தலை வைத்து யோக நித்திரையில் ஆழ்ந்திருந்தாராம் ராமன். அப்போது இந்திரன் மகனான ஜெயந்தன் காகத்தின் ரூபம் எடுத்து வந்து தேவியை
இம்சித்தானாம். தனது மணாளனின் உறக்கம் கலைந்து விடுமோ என்கிற அச்சத்தில் பிராட்டி அந்த வலியை வேதனையை பொறுத்து கொண்டிருந்தாளாம். கண்விழித்து எழுந்து இந்த காட்சியைக் கண்ட ராமன் கோபத்துடன் அரக்கனை கொல்ல பாணத்தை விட பயந்து ஓடிய அந்த காகம் அபயம் கேட்டு கைலாசம் சத்தியலோகம் உட்பட எல்லா லோகங்களுக்கும் சுற்றி எவரும் அபயம் தர மறுக்க முடிவாக ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனின் பாதங்களில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு சரணமடைந்தானாம். இதைத்தான் சுவாமி தேசிகன் தனது பாசுரத்தில் அந்த காக்கையைப் போல கட்டுக்கடங்காமல் அலையும் என் மனதை உன் திருவடிகளில் அடைக்கலமாய் வைத்தேன் என்று பாசுரமிட்டிருக்கிறார். அதுதான் சரணாகதி. பக்தர்களே, நாமும் இந்த சம்சார துன்பங்களிலிருந்து விடுபட கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு இந்த திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானிடம் சரணாகதி பண்ணோமானால் நம்மையெல்லாம் காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தோடு உறுதியோடு வைகுண்டத்தை விட்டு இறங்கி இந்த கலியுக வைகுந்தமான திருமலையில் எழுந்தருளிருக்கும் எம்பெருமான் நம்மை ரட்சித்தே தீருவார் அல்லவா? அவரது அந்த சங்கல்பத்தை உறுதிப்படுத்தவே நமக்காக அர்ச்சக சுவாமி இந்த ரட்சையை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார். இற்றை பறைகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா, எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உன்றனோடு உற்றோமே யாவோம், உனக்கே நாமாட்செய்வோம் என்று ஆண்டாள் பிராட்டி சொன்னது போல நாமும் வேறு எந்த விஷயங்களிலும் மனதை அலையவிடாமல் எம்பெருமானின் அவரது திருப்பாதங்களை பற்றிக் கொள்வோம். பக்தர்களே, ஆகவேதான் அவருடைய அந்த உறுதியை அந்த அதை நிரூபிக்கவே இதோ இப்போது அந்த ரட்சையை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இதில் இன்னொரு விஷயம் உள்ளது. எம்பெருமானோ லீலா மானுஷ விக்கிரகம். அவரது திருமுடியிலிருந்து திருப்பாதம் வரை, திருப்பாதத்திலிருந்து திருமுடி வரை எவ்வளவு வர்ணித்தாலும் போதாது. அப்படிப்பட்ட சர்வ மோகன ஸ்வரூபனுக்கு தீக்கண்களின் திருஷ்டி எதுவும் படாமல் இருக்கக்கூட இந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார் என்று கொள்ளலாம் அல்லவா? ஆகவே இந்த இரண்டு விதங்களையும் யோசித்து பார்த்தோமானால், ஒன்று உறுதியை உறுதிப்படுத்துவதற்கு, இன்னொன்று தீக்கண்களின் திருஷ்டிப்படாமல் இருப்பதற்கு. ஆக இந்த இரண்டு காரங்களுக்காகவும் திருக்கல்யாண சமயத்தில் மந்திரித்த ரட்சையை எம்பெருமானின் திருக்கரத்தில் இப்போது சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்து இப்போது பிராட்டிமார்களிடம் வருகிறார். எம்பெருமானையே மணாளனாக அடையும் பாக்கியம் பெற்ற அந்த பாக்கியவதிகளுக்கும் நாம் பெருமானுக்கு செய்கின்ற அத்தனை உபச்சாரங்களையும் பண்ண வேண்டும் அல்லவா? முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயார். பத்மாலங்கிருத பாணிபல்லவ யுகாம் பத்மாசன் அஸ்தாம் ஸ்ரீயம். ஒரு தாமரை மலரை தான் ஏந்தி இன்னொரு தாமரை மலர் அவளை ஏந்த எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்தில் ஒரு சனம் கூட நீங்காமல் இருக்கும் அந்த திருமகளுக்கு இப்போது முதலில் அர்க்யம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற அந்த உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அருகில் இருப்பவளோ பூமாதேவி. பூ என்றால் பூமண்டலம். அந்த பூமண்டலத்துக்கே அரசி பூமிதேவி தாயார். நாம் எல்லோரும் அந்த பூமிதேவி தாயாரின் மடி மீது தவழும் குழந்தைகள். நம் குற்றம் குறைகளை பொறுத்தருளும்படி அந்த பூமி மாதாவிற்கும் அவளுக்கு நினைவூட்ட அவளுக்கும் அந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியமல்லவா? இந்த இரு தேவிகளும் தான் நம்மை எம்பெருமானிடம் கொண்டு சேர்ப்பவர்கள். ஆகவே அந்த இரு தேவிகளுக்கும் இப்போது அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பித்து அர்ச்சக சுவாமி நம்முடைய அந்த வேண்டுதல்களை தேவிகளின் மூலமாக எம்பெருமானுக்கு சொல்ல உள்ளார். தயா தேவிகளான அந்த தேவிகள் இருவரும் நமது அந்த வேண்டுகோள்களை எம்பெருமானுக்கு நிச்சயமாக சொல்வார்கள் என்று நாமும் நம்புவோம். ஆகவே அந்த இரு தேவிகளையும் முன்னிட்டு கொண்டு கோவிந்தனை நாம் சரணமடைவோம். இதோ முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ரமா எனும் ஸ்ரீதேவியை முன்னிட்டு கொண்டு கோவிந்தனை நாம் சரணமடையலாம். அடுத்து பூமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமிதேவி தாயாரையும் முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை நாம் சரணமடையலாம். பக்தர்களே, இரு தாயார்களுக்கும் இப்போது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இதோ முடிவடைய உள்ளது.
அதையடுத்து இன்னொரு நிகழ்வும் உள்ளது. இன்றைய திருக்கல்யாண உற்சவத்தை அதோ நமக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அல்லவா அர்ச்சக சுவாமி. அவருக்கும் இந்த திருக்கல்யாணத்தில் விக்னங்கள் எதுவும் வராமல் இருக்க, அதாவது பல லோபங்கள் உள்ளன. கிரியாலோபம், மந்திரலோபம், ஸ்ரத்தாலோபம், திரவியலோபம் என்று எத்தனையோ லோபங்கள். இந்த லோபங்கள் வந்து இந்த திருக்கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான தடைகளும் வராமல் இருப்பதற்காக அதோ இன்னொரு சுவாமி அவரது கரத்திலும் அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை இதோ இப்போது கட்டுகிறார். இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன வைபவம் நல்ல முறையில் முடிந்தது. எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் தொடர உள்ளன. அக்னி பிரதிஷ்டை, அதைத் தொடர்ந்தாற்போல் ஹோம காரியங்கள், இவை அனைத்தும் இப்போது தொடர உள்ளன. நம்முடைய சம்பிரதாய முறைப்படி திருமணங்கள் யாவுமே அக்னி சாட்சியா வைத்துதானே நடைபெறுகின்றன. அக்னி என்றாலே பரிசுத்தம். மந்திரங்களை சொல்லி தேவதைகளை ஆவாகனம் பண்ணி அவர்கள் சாட்சியாக ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் என்ற பந்தத்தில் நுழைவதாக ஐதீகம். ஏதோன்விந்திரமித்யக்னாலகம் ப்ரோக்ஷ்யாம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாம் சுத்தைருக்தைர்வாவృத்வாம்சம் சுத்த ஆசீர்வான் மமத்தோம் மகதேவாத்ர வினமாகதந்தாம் மய்யாசீரஸ்து மகதேவஹோதி தேவ்யா ஹோதாராமனிஷந்தமூர்வேரிஷ்டாஸ்யாமதனுபாஸ்வீராஹம் மாக்கையஜந்தம மகானி ஹவ்யாகோதி சத்யாமனசோ மே அஸ்தோம் யே நோ மானிகாங்கதவச்சனாஹம் விஸ்வதேவாசோ அதிவோச்சதாமீம் देवी ईश्वरवीरुणकृणोद विश्वे देवास इह वीरगत्वं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन्ने उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मान यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चदस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमीगर्भाज्जनगन्यो मयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगिमस्मासु धेक्कजस्रोदेति कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवां तत्सविदर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतस्सुरुचो वेन आवहं सपत्निका उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गौरमसतश्च विवहम् ॐ ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमोधेनुकं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगं सवेगं पितुश्रवणय्यो तदासु तस्मै ॐ सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाग नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग नमः सर्वोपचारान् समर्पयामीं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामीं सोम प्रोक्षिष्यामीं प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देहिं ॐ प्रोक्षां पात्रादाधावमाधागाम् दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसविदप्रहरेम वीतगे पूषाते ग्रन्थिं विष्कतुम् आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तुनामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासि दक्षिणतो विष्णोस्तुपासि उत्तरतपदेच्चैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपासि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुद्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णाति स वो गृह्णातु तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रिकोः ब्रह्माणमावाहगामीं सोममावाहगामीं ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामीं सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणगां को वाग्नक्तिसवाग्नक्तं संविशन्ताल्लै वीर्विषपात्राणि देवगच्छागे दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेनां ॐ प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्यां
ఓం శ్రీ విష్ణుమావాహగామీం బృహస్పతిమావాహగామీం మిత్రమావాహగామీం వరుణమావాహగామీం ఆదిత్యానావాహగామీం అశ్వినమావాహగామీం పూషణమావాహగామీం కక్షమావాహగామీం కక్షదేవత సోమమావాహగామీం ఔపాసనేక్నమావాహగామీం యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహగామీం సర్వదేవానావాహగామీం ఆద్యపాత్రే ప్రజాపతిగే దుష్టనిర్వపామీం ఇంద్రాగే దుష్టనిర్వపామీం వసుభ్యో దుష్టనిర్వపామీం రుద్రేభ్యో దుష్టనిర్వపామీం అపౌపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే దుష్టనిర్వపామీం బృహస్పతిగే దుష్టనిర్వపామీం సర్వదేవేభ్యో దుష్టనిర్వపామీం ఆద్యం దృప్యదిష్టగామీం చరం దృప్యదిష్టగామీం అగ్నిర్జ్యోతిరసీం సమిదసి స్వాహాం అమృతమసి వారుణమసీం అంతరితకం రక్షోంతరిత ఆరాధగః ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట ఆరాధగః చిత్పదిస్వాపున త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిస్వాహాం వాక్పదిస్వాపున త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిస్వాహాం దేవస్వాదవిదాపున త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిస్వాహాం తత్సవితుర్వరేణిగం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధిగో గౌర ప్రచోదయాత్ కరసంపూర్ణా వా సమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతజ్ఞస్పర్శగిత్వా అభ్యర్చ్యాం అక్షతాం ఆజ్యాం చరుభిః ఇంద్రాయ నమః అగ్నగే నమః యమాయ నమః నిరుదగే నమః వరుణాయ నమః వాగవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నగే నమః జాతవేదసే నమః సహోతసే నమః అజరాప్రభవే నమః వైశ్వానరాయ నమః నిర్యాదసే నమః పంక్తిరాదసే నమః విసక్పినే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః దితేన మన్యస్వ అనమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసుభ అగంతగిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్యస్వర్థస్పతేత్తవత్తగితాస్మాన్ ప్రసగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాత్యేనాం సమేధగ స్వాహా వాగవ్యాదాగ్నేగాంతం ప్రజాపతగే స్వాహాం నైరుత్యా ఈశానాంతమింద్రాగ స్వాహాం అగ్నగే స్వాహాం సోమాగ స్వాహాం వసుభ్య స్వాహాం మరుద్భ్య స్వాహాం రుద్రేభ్య స్వాహాం అపౌపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహాం బృహస్పతగే స్వాహాం మిత్రాగ స్వాహాం వరుణాగ స్వాహాం ఆదిత్యేభ్య స్వాహాం అశ్వేభ్యాగ స్వాహాం పూష్ణే స్వాహాం కక్షాగ స్వాహాం కక్షదేవత సోమాగ స్వాహాం ఔపాసనేక్నాగ స్వాహాం యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహాం సర్వదేవేభ్య స్వాహాం ద్రవ్యాభిగార్గ్యాం చరం సావిత్ర్యా గృహీత్వా జుక్వా వ్యాహృతిర్జుహోతిం ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం సువస్వాహాం ఓం భూర్భవస్సువస్వాహాం అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత ఆఘారాంతే సర్వదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణవాహుతేర్హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతనాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహాం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహాం త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః ततो धर्मानि धारयन् स्वाहां विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहां तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरादिदग् स्वाहां तद्विप्रासो विपन्यमोजा कृपागुं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहां वं भूस्वाहा वं भवस्वाहा वोगं सुवस्वाहां ఓం భూర్భవస్సువస్వాహాం అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీః మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక
తాము తామె పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద వేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద వేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభాం విఖనో మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమితశక్త్యాభ్యగమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనేక్షుసురాసర్పిర్దధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలామృతభద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే
वेङ्कटाचलें मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि चाम् एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे चाम् आवृत्त अनावृत्तमहापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमातिरात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थम् श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्तगृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिताम् कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थम कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्याम् अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्याम् अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्याम् दिव्य मंगल विग्रहस्याम् सुदर्शन पांचजन्य कौमोदके नंदक शार्ंगादि पंचायुधधरस्याम् कोटि सूर्य प्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुंठनायकस्याम् श्रीमद् वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेक प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्याम् परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्याम् श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रेम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेक प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूल प्रकृति स्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रय कर्मणोख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्याम् श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेक प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् समस्त देवताम् निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेक प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालंकृतायाम् दिव्य पीतांबरधरायाम् दिव्यमाल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुड वाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनोम् अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववैदल पंचारुषेक प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनंद गुणात्मिकाम् मूल प्रकृति रूपाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगो संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीध्वम् दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिगारुषेक प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीम् अत्यंत सौंदर्यवतीम् बहु श्यामलांगीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीध्वम् दास्यामि कन्याम् कनक संपन्नाम् कनकाभरणैर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोक जगेशयाम्
कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाग सुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धगे विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु இப்போது தேவிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. அடுத்து திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக இதோ அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். ஒரு தாயாரிடம் குழந்தை தனக்கு அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்கலாம். ஆனால் அந்த தாயாருக்கு தெரியும் எதை கொடுத்தால் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது என்று. அதே போல நமக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் திகழ்கின்ற எம்பெருமானும் அப்படித்தான். நாம் கேட்பது எதுவானாலும் அது நமக்கு எந்த வகையில் நன்மையை தரும் என்பதை பார்த்துதான் பகவான் கொடுப்பார். அதை விளக்க இது ஒரு சின்ன கதை. அந்த ஊர் அரசனுக்கு பிறந்த நாள் வந்ததாம். அன்று அனைவருக்கும் அன்னதானம் அளிக்க வேண்டும் என்று விரும்பி ஊர் மக்கள் அனைவரையும் வர சொன்னாராம். எல்லோரும் வந்து வரிசையில் நின்றார்கள். அவர்களோடு ஒரு ஏழை பிச்சைக்காரனும் நின்றானாம். இன்றைக்காவது நமக்கு பசிக்கு சோறு கிடைக்காதா என்கிற ஏக்கம் அவனது கண்களில் தெரிந்ததாம். வரிசையில் நின்றவர்களுக்கோ அந்த பிச்சைக்காரன் தங்களோடு வந்து நிற்பதே பிடிக்கவில்லை. ஆகவே ஒவ்வொருவரும் அவனை விரட்டிக் கொண்டே இருக்க இவனும் தன் பிறவியை நொந்தவாறு தள்ளி தள்ளி போய் நிற்க முடிவில் அன்னதானமே முடிந்து விட்டதாம். தன் விதியை நொந்தவாது அருகில் இருந்த கோவிலின் அந்த குளத்திற்கு போய் தண்ணீராவது குடிக்கலாம் என்று போனானாம். அதில் தெரிந்த தன் முகத்தை பார்த்து, இப்படியாவது ஒரு பிறவி வேண்டுமா? எந்த காரணத்துக்காக நீ என்னை படைக்க வேண்டும்? இந்த ஒரு நாளாவது வயிறார சாப்பிடலாம் என்றிருந்தேன். அதிலும் இப்படி இந்த பிறவி எடுத்ததன் காரணத்தால் அதுவும் முடியாமல் போச்சு. இது நியாயமா என்று எதிரே இருந்த அந்த கோவில் கோபுரத்தை பார்த்து உரக்க கேட்டானாம். அப்போது அந்த புஷ்கரணிக்கு உலா வந்த மன்னருக்கு இவன் சொல்வது கேட்டுவிட்டது. அடடா, நம் பிறந்த நாளென்று ஒருவன் பட்டினியாக இருப்பதா என்று அவன் அருகில் போய் விசாரித்தார். அவன் அன்று நடந்தது முழுவதையும் சொல்ல, வா என்னுடன் என்று கூறியபடி அவனை தனது தேரிலேயே அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அறுசுவை உணவும் படைத்து உடுத்திக்கொள்ள வஸ்திரமும் அளித்தாராம். உடனே அவன் விக்கி விக்கி அழ ஆரம்பித்தானாம். அரசருக்கோ ஒன்றும் புரியவில்லை. ஒருவேளை செலவுக்கு பணம் வேண்டும் என்று நினைக்கிறானோ என்று ஒரு தட்டில் தங்க காசுகளை வைத்து அவனிடம் கொடுக்க, அரசே, நான் இன்று இந்த கோபுரத்தை பார்த்து கும்பிட்டேன். எனக்கு உடனே அருமையான உணவு கிடைத்தது. கோபுரத்தை கும்பிடும்போதே இவ்வளவு வருகிறது என்றால் கோவில் உள்ளே போய் அந்த தெய்வத்தை தினமும் கும்பிட்டால் அவர் என்னை அடுத்த ஜென்மத்திலாவது நான் இன்னொருவருக்கு தர்மம் செய்யும்படியான நிலைமையை அளிக்க மாட்டாரா? நான் இவ்வளவு நாளாக ஏழையாக மட்டும் இருந்தேன், ஆனால் ஒரு முட்டாளாகவும் இருந்திருக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். அதனால்தான் அழுகிறேன். என்னை ஏன் படைத்தாய் என்று ஒரு வார்த்தை கேட்டவுடனே உங்களை அனுப்பி என் தலையெழுத்தையே மாற்றிவிட்டாரே. அந்த பகவானிடத்தில் நான் இதுதான் வேண்டும் என்று கேட்பதை விட அவரை நான் பக்தியோடு தினமும் சேவித்திருந்தால் அவர் பல மடங்கு தருவார் என்பதை புரிந்து கொண்டேன் என்றானாம். பக்தர்களே, நமக்கு எது வேண்டும் என்பது பகவானுக்கு தெரியும். நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவன் நிச்சயம் செய்வான் என்ற அந்த நம்பிக்கையை வைக்க வேண்டும். அந்த நம்பிக்கையோடு பக்தியை வைக்க வேண்டும். இதோ இந்த ஏழுமலையானை சேவிக்க பக்தர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக நாடென்ன இந்த உலகத்தின் எல்லா மூலைகளிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா? சிலர் இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று கேட்பதற்கு வருகிறார்கள். சிலர் தனக்கு கிடைத்து விட்டதற்கு நன்றி சொல்ல வருகிறார்கள். அனைத்தையும் புன்னகையோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் திருமலையான். ஆகவேதான் சிலர் சொல்வார்கள், நாம் பெருமாளை எப்படி சேவித்தேன் என்பது முக்கியமில்லை, பெருமாள் நம்மை பார்ப்பதுதான் முக்கியம் என்று. அதுபோல அந்த பகவானை இருகரம் கூப்பி சேவித்து, பெருமானே, எனக்கு என்ன வேண்டும் என்பது உனக்கு தெரியும், அதை நீ கொடு என்று கேட்போம். ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசுஜதாம் தந்திரகோ வேத அன்வசுத்யந்தாம்
तान हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापति सोमकुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वदत्यन्ताम् तान हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीं माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే। చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే। मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवित प्रसुवाम् ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानागुंसोऽस्य प्रजां मुञ्चुतमृत्युपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथेजग्स्त्रीपौत्रमखन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गारहवत्य प्रजां मुञ्चुतमृत्युपाशात् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यता यथेजग्स्त्रीपौत्रमखन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गारहवत्य प्रजामस्केन गतु दीर्घवायुः अशोन्यापस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिप्रबुध्यतां मेघ स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोदं च स्वाहा आकोदिश्च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ओं भू श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्वां देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्य। इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम्
इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजा नावपन्ति दीर्घागिरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजा नावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजा नावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजा नावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजा नावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः अस्य देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतिदेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नोगतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कदगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवे भुजक्षुरादिदग्गः स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपाकं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्गः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्कुन्यार्थम् उपरिष्टानन्तहोमं होष्केम् अतिदेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ॐ यदस्क कर्मणोत्यरीरितं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टुकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहृतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशरनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसितेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणीं सप्तहोत्राः सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्यौर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा द्यौर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णः स्वाहा मृतधान विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागिजुहो स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम्
अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावेः आवाहिदेवताभ्यो नमः यथा संविदास्थानं प्रवेशगामि अक्षितमक्षित्यै जहोमि अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रेच्यां प्रेच्याम् ऊर्ध्वागां अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः प्रतिवपनगा दक्षिणतः प्रतिवपनगा उत्तरतः प्रतिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोह्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषदगस्तदिवं गच्छततो न वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् त्रगायुषं जमदग्नेः कस्य वश्य त्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाज्ञा बलाज्ञा शताज्ञा शतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणाकचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः कुशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षगा गजन्वताम् आपो जनगथा जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुतें प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत् समारोपणं सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜஹோமம், அதைத் தொடர்ந்து பூர்ணாகுதி, பின்பு அஞ்சனமிடுதல் என்கிற நிகழ்வும் முடிந்து இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லீம் ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஹரிச்சந்தன யோக திருஷ்யாம் சாக்சாக் க்ஷமாம் காருண்யாம் கமலாமி வான்யாம் கோதாம் அனன்ய சரணவ் சரணம் பிரபத்தியே. சுவாமி தேசிகன் அருளிய கோதாஸ்துதி. பக்தர்களே, அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி அந்த கண்ணனையே மணப்பதாக கனவில் கண்டு அவள் அதை தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் 10 பாசுரங்களும். அந்த பாசுரங்களை இதோ இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் போது அனுசந்திப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இதை அனுசந்திப்பவர்களுக்கு நல்ல புத்திர பாக்கியமும்
நல்ல கணவன் கன்னிப்பெண்களுக்கு நல்ல கணவன்மாரும் கிடைப்பார்களாம். இதுவே இதனுடைய பலஸ்துதி. அடுத்து இன்னொரு நிகழ்வுக்கு வருகிறோம். அன்று உலகம் உய்ய கீதையை உபதேசித்தவன் கீதா நாயக்கன். அன்று அர்ஜுனனின் தேர்க்கட்டிலில் நின்று கொண்டு பாண்டவள் இளவலான அர்ஜுனனை முன்னிட்டு கொண்டு நம் அனைவரும் உய்வு பெற கீதையை உபதேசித்த அந்த மகா புருஷன், அந்த கண்ணனே இந்த கலியுகத்தில் நம்மையெல்லாம் கலியின் பிடையிலிருந்து உய்விக்க திருவேங்கடநாதனாக, திருமலை வாசனாக, ஸ்ரீவாசனாக, அர்ச்சாரூபியாய் இந்த திருவேங்கடமலை மீது நின்ற கோபத்தில் தரிசனம் தருகிறார். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ அகம் த்வா சர்வ பாப்பேப்யோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுச்சக என்று அன்று சொன்னார். இன்று அவரே தன்னுடைய திருக்கரங்களால் தனது திருப்பாதங்களை காண்பிக்கிறார். நாமும் அந்த கோவிந்தனை சரணமடைந்து நமது அகங்காரம், மமக்காரம் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அவரின் திருப்பாதங்களில் சரணமடைவோம். அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது மாலா பரிவர்த்தன நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. முகூர்த்தமானதும் முகூர்த்த மாலையை எம்பெருமானிடமிருந்து ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும், பின்பு அவள் சூடிய பின் எம்பெருமானுக்கும், அதே போல அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமிதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்து இப்போது அவள் சூடி அழகு பார்த்ததும் அவளுடைய மேனி நறுமணத்தோடு சேர்த்து அந்த புஷ்பமாலையை கொண்டு போய் எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் இதோ சேர்க்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அவள்தானே சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி, பாடிக் கொடுத்த பைங்கிளி. அவள் விரும்பிய அந்த மாலை திரும்பவும் கோவிந்தனிடமே வந்து சேர்ந்து விட்டது. இனி திருக்கல்யாணத்தின் முடிவுக்கு வருகிறோம். இதுவரை எட்டத்தில் இருந்தே எம்பெருமானை தனது கடைக்கண்களால் தரிசித்துக் கொண்டிருந்த தேவிகள் இருவரையும் எம்பெருமானின் அருகே கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது பெறவுள்ளோம். அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோபண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. எம்பெருமானின் திருமுடியிலும் தேவிகளின் திரு சிரசிலும் மங்கள அச்சதையை சேர்ப்பார்கள். முடிவில் கற்பூர மங்கள ஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவு பெறும். திருக்கல்யாணத்தை தரிசித்த நம் அனைவருக்கும் எம்பெருமானின் திருமலை தெய்வமாம் எம்பெருமானின் திருவருள் கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்து. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திண்டோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ